do it. My learned President, who is being accused? The executive. Executive. And it is not just a simple accusation. It says that there's been a policy that has been going on since a very long time. Yes. So who would investigate? The executive? Well, the executive will investigate its own self? No, sir. Will this court, let me respond. So let us not get into this. Sir, let me respond to this. And Justice Mansoor Ali Shah has made it very clear. Let us move forward. Yes. Let us not go into this. Otherwise, 2018 also ought to be investigated. And people must be held accountable. There is impunity against this culture of deviance. And that is what has made the constitution unworkable. Dekhiye, Sadr Sahab sabko pata hai. Sadr Sahab, can this courts justify the human rights violations taking place today? We all know it's happening. So let us not close our eyes. Let us not bury our heads under the sand. Let us face the reality. It is our responsibility to uphold the Constitution and protect the fundamental rights. We can't just shut our eyes. It is happening. Let us not pretend that nothing is happening. So, Mr. President, let's move with the suo motu now. Sorry, I just want to support what Athar Saab is saying with one important rider. If it is happening, it has not been mentioned in the letter. It has the events of a year before. And I will take great exception because I will not tolerate this. If anything has happened on my watch, please bring it to my notice and see what will happen then. So nothing has been brought on my, it may be happening which nobody is disclosing, that's another thing. For that I cannot be held responsible or accountable. And I place myself accountability. If there is an interference, then I am accountable, provided it is brought to my attention. If things happened in my predecessor's time or even earlier, I'm not in any manner responsible. I mean, I think that's we should be clear about. But still we've taken it seriously that past events should also be. And if this timeline can go beyond. And probably for this reason, probably Jilani Saab had suggested that I may be allowed to expand the letter. I don't know what was in his mind, but I presume that was what he was aiming at. Riyazat Saab hai Pakistan Bar Council ke ya nahi hai? Pakistan Bar Council ki taraf se koi hai? Mr. Shahzad Shaukat sir, let's just proceed further. We have taken a suo motu. हम अब इसमें कुछ करना है और करना ये है कि वाजे किया जाए सारा तरीकाकार कि कैसे चलना है और एम्पावर किया जाए चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स आल्सो कि अगर कल को उनके कोई जज उनको कुछ बताते हैं तो वो कुछ करें और इसी तरह उनका सेशन जज उनको कुछ बताता है तो वो करे ना हाई कोर्ट का जज और अगर नहीं करता तो फिर हम उसके बारे में भी वाजे करें कि क्यों नहीं करता मेरा ख्याल आप अपना सिस्टम तो पहले बराबर कर लें और उसके बारे में आपसे आरा पूछ रहे हैं कि बताइए हमें कि आपकी क्या सजेशंस है वी हैव समथिंग इन आवर माइंड बट आप अपना बताइए कि क्या सजेशंस आपकी आ सकती हैं माय लॉर्ड के बात को बढ़ाते हुए हम क्यों ना इस लेटर को एक अपॉर्चुनिटी समझे पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इस इशू पे हम बैठे हैं मेरे ख्याल में इससे इम्पोर्टेंट इशू कोई भी नहीं है इसलिए कि जब तक अदलिया आज़ाद नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता तो इसको हम अपॉर्चुनिटी समझे हम ये ना देखें कि लेटर कैसे दिया गया हम ये ना देखें कि देर से है जल्दी है गलत है सही है बिल्कुल इसको अपॉर्चुनिटी ले छोड़ दे पास को जैसे अतर साहब ने कहा पास को याद जरूर करें पास से हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं उससे हम सबक सीख सकते हैं लेकिन कम से कम आज मैं इस नियत से तो उठूं कि मैं आज़ाद हूं मेरे बात के आने वाला समझे कि मैं आज़ाद हूं फ्यूचर कोर्स ऑफ कंडक्ट तो बनाए ना जी मतलब पुरानी बात तो आगे चलें बताएं सजेशंस अगर देखें दिस इज आई नो यू आर नॉट ऑन नोटिस और एनीथिंग you can think about it, you can discuss amongst your colleagues, you can submit proposal, whatever you want to do, we will certainly entertain it, but always keeping the Constitution paramount. Now one provision of the Constitution is also important, Article 203. Agar aap Article 203 zara padh lein, because an impression should not be, because independence is vertical, it is also horizontal.
Each High Court shall supervise and control all courts subordinate to it. There is no equivalent mechanism in the Constitution which says the Supreme Court will supervise and control all high courts. So just bear that in mind. Now, tomorrow, someone may say we are interfering in the workings of the High Court. We have to be very careful. Now, please read the one article preceding this one. 202. Subject to Constitution and law, a High Court may make rules regulating the practice and procedure of the court or of any court subordinate to it. Like we have our rule-making power, in respect of our rule-making power, the Parliament has passed legislation, Supreme Court Practice and Procedure Act. In respect of the High Courts, they are fully empowered, and legislation can also follow. So just keep the Constitution in mind when making proposals. I don't want to run foul of the Constitution by directing the High Court to do something. President साहब, the problem हमारे पास जो आया है ना, वो लेटर में जो वाजे हुआ है कि उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को कहा तो कुछ नहीं हुआ. अब सवाल हमारे लिए ये है कि चीफ जस्टिस कुछ ना करे तो क्या करना है. हम नहीं कह रहे कि हम हाई कोर्ट में इंटरफेयर करते हैं. हम कहते हैं हाई कोर्ट को एम्पावर करें कि क्या एक्शन उसने लेना है. वाजे नहीं है, वाजे नहीं है. और ये चीज अभी हमारे सामने इसीलिए आई है कि वो बार बार लिख रहे हैं, वो कुछ उनके मुताबिक नहीं हो रहा. तो अभी हमें वाजे करना चाहिए कि अगर वो ना करें, हर हाई कोर्ट के पास अपनी पावर है, कंटेम्प्ट की पावर है, वो प्रोसीड करें ना, प्रोसीड करें. और अगर तरीकाकार वाजे करना जरूरी है कि अगर वो नहीं प्रोसीड करते तो फिर कैसे एस्केलेट होगा प्रॉब्लम, किसने अटेंड करना है. ये कुछ चीजें हैं जिसको हमें सोचना है. हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे हाई कोर्ट की पावर्स में, लेकिन उनको एम्पावर तो कर सकते हैं. और रेजी साहब, आपने ये भी बताना है कि क्या एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर है कि वो इंटरफेयर करें. नहीं कर सकती, फंडामेंटली नहीं कर सकती. आप क्या कर रहे हैं? बाकी नहीं है, इसके लिए फंडामेंटली नहीं कर सकती. इसके लिए आपने क्या ट्राइकोटमी का प्रिंसिपल है, इसके लिए आपने करना क्या, आपने ये बताना. अच्छा, ये सारे हम आप पे बहुत सारे सवाल छोड़ के जा रहे हैं. आप सोचिए समझिए. आज मुझे पता है आप भी नोटिस पे नहीं हैं. मैं सिर्फ वजाहत कर दूं कि हम 7 जजेस क्यों आज बैठे हैं और फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठा है. क्योंकि सिर्फ 7 जजेस ही इस्लामाबाद में अवेलेबल थे, क्योंकि बाकी जजेस ने अपनी रिक्वेस्ट पे, मैंने उनको नहीं किया है. हम भी ज़रा जमहूरियत के तकाज़ों पे बिलीव करते हैं. कुछ कराची में हैं और कुछ लाहौर में हैं. तो हम शायद फुल कोर्ट तश्कील दे दें अगली दफ़ा. ठीक है, तो हम आपस में ज़रा मशवरे कर लेंगे. क्योंकि आज की मैं वजाहत कर दूं, जितने जजेस थे इस्लामाबाद में वो सब के सब आज मौजूद हैं, बाकी लाहौर में और कुछ कराची में. क्योंकि ये मसला, इसको हम सिर्फ दिखा रहे हैं आपको कि हर मोड़ पे सीरियसनेस है, हर मोड़ पे. ठीक है, तो पाकिस्तान बार काउंसिल और फिर इन्होंने भी जिक्र किया 1-2-3 पिटिशंस आई हैं, वो भी कमेटी के थ्रू आ जाएंगी. फिर देखें आती हैं हमारे सामने, नहीं आती हैं तो मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ. वो भी आ जाएंगी. तो फिर हम आई थिंक कुछ और रह गया बस यही इसमें ये. क्योंकि अब वो जजेस गए सब ईद तक वहाँ हैं, तो उनको मेरे ख्याल में वापस आने देते हैं, आ जाए. क्योंकि मगर ये तो आप समझें कि आज का हुक्म समझें कि कोई इंटरफेरेंस हम नहीं टॉलरेट कर रहे हैं. आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, मगर हम आपको हुक्म दे रहे हैं आज. ठीक है, ठीक है. ये वाजे हो गया. आपके जहन में कोई सवाल? Lord, we are looking forward to the hearing of this case by the full court. ये 184 का कोई इशू तो नहीं है कि ये रेमेडी है या नहीं? Not according to me. अगर आप सपोर्ट करते हैं? जी, I would insist as far as जो this case should now be taken to its logical conclusion. सॉरी, जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है और जो उस लेटर का फर्स्ट पैराग्राफ सीक कर रहा है, वो आप या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल दो ही बॉडी. नहीं, एक चीज मैं वजाहत कर दूं. हम सुप्रीम जुडिशियल ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के उस सूरत में कह रहा हूं. इसमें कई आईनी इदारे हैं. सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अपनी जगह है,
कमेटी कानूनी इदारा है, आईनी इदारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह है, हाई कोर्ट अपनी जगह है। मैं ये कह रहा था सर कि जहां पे अगर कोई चीज कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू हो सकती है वो हो जाएगी, प्रपोजल दे सकते हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस आपने अदरवाइज हाई कोर्ट्स के लिए देनी है वो आप दे सकते हैं, इन प्रोसीडिंग्स में दे सकते हैं। नहीं, अगर आप प्रपोजल इंक्वायरी है जाहिर है वो यहाँ नहीं हो सकती, उसके लिए कुछ और जो मैं समझ पाया हूँ अटॉर्नी जनरल से, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का तस्करा इसमें है, तो आप भी और ये भी अगर कोई आप समझते हैं कि कुछ उसमें कमी है या उसमें कुछ चीज़ मजीद डालना है तो तहरीरी तौर पे अगर आप हमें दे दें तो हम वो वाला हिस्सा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये सुप्रीम हुक्म तो नहीं दे सकती सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उस तरह से, वो भी आपके सामने आ जाएगा। नहीं ठीक है, मगर वो जरा सा देखें आईनी तरीके से जरा चलें तो अच्छी बात रहेगी। तीन एस्पेक्ट्स in my very full submission. First aspect, if there is anything which can be done through code of conduct, Supreme Judicial Council. Guidelines to the high courts through you in these institutional response to, but if there is any inquiry which has to take place that cannot happen in these proceedings, उसके लिए आप कोई चीज और मैकेनिज्म मुनासिब समझते हैं, उसके लिए हमारी सपोर्ट आपके साथ। जब मैंने ऑलरेडी अपना प्रोग्राम बना लिया था, सब जजेस का पोस्ट ईद भी बन गया है, मैं एक हफ्ते लाहौर में हूँ, एक हफ्ते कराची में हूँ, तो वापसी फिर टेंटेटिवली 29th कौन सा मई 29th अप्रैल देखें आप लोगों के लिए कन्वीनियंट है डेट? ठीक है सर, ठीक है, शायद हम चेंज करते हैं, अब जरा बाकी जजेस से कन्वीनियंस पूछ लेते हैं। आप देख लीजिए 29th टेंटेटिवली आप नोट कर लें, फिर कोशिश करेंगे कि डे टू डे करके ख़त्म करें, क्योंकि ये जजेस का बैठना, बिकॉज सारा काम फिर वो दूसरा काम नहीं हो पाता है और फिर पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, वो बहुत हमें डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। एनीथिंग एल्स? टेंटेटिवली हम देख लेंगे कौन सी डेट है, कुछ बता रही है कि कोई और कॉन्फ्लिक्टिंग डेट है, बट इट विल बी अराउंड दैट इन दैट वीक, शायद 29 तो 30 हो जाए। आई विल जस्ट हैव अ लुक एट इट। चले।